वेलकम टू 20% सीरीज। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 2 ऑफ थर्मोडायनामिक्स और इवनिंग आवर का है आवर नंबर 6। आज के हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं प्रोसेस। क्या है बच्चों प्रोसेस? प्रोसेस एक ऑपरेशन है जिससे सिस्टम एक स्टेट से निकल के दूसरे स्टेट पे जाती है, उसी को कहते हैं प्रोसेस। जैसे हमारे पास पानी होता है और पानी को जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद वो उड़ जाता है, तो वो लिक्विड का कन्वर्शन उसका क्या में हो जाता है? गैस में। तो व्हेन द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस द प्रोसेस इज कॉल्ड बॉइलिंग। तो इसी तरह जब सिस्टम एक फेज से निकल के एक स्टेट से निकल के दूसरे स्टेट में जाती है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस ऑपरेशन को हम कहते हैं प्रोसेस। लेकिन जब हम प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस करते वक्त कुछ पैरामीटर्स चेंज होते हैं तो कुछ चेंज नहीं होते, कुछ चेंज होते हैं तो कुछ चेंज नहीं होते। डिपेंडिंग अपॉन दैट देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ द प्रोसेसेस वी हैव। सो फर्स्ट वी हैव द प्रोसेस। प्रोसेस ये एक ऑपरेशन है जिससे सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चली जाती है, ऐसे ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं? प्रोसेस। तो सबसे पहले हमारे पास उस प्रोसेस में की डेफिनेशन है। उस प्रोसेस में द प्रोसेस which is carried out, यह ऐसी प्रोसेसेस है which is carried out at constant। क्या कांस्टेंट है पता नहीं, ठीक है। तो जब उसमें विच इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट, मैं यहां लिखता हूं एट कांस्टेंट, ठीक है, ये यहां पे भी लिखेंगे कांस्टेंट। जो भी कांस्टेंट है वो हम यहां लिखेंगे। अगर उसमें क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर। अगर उसमें क्या कांस्टेंट है? प्रेशर। अगर उसमें क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम, ठीक है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ऐसी प्रोसेस को कहेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो उसको कहेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इट इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। So this is the isothermal process, isobaric process, isocoric process। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। टेम्परेचर कांस्टेंट है, देयरफॉर जीरो क्या रहेगा? डेल्टा टी इक्वल्स टू जीरो, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू जीरो। प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू जीरो, एंड वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू जीरो। इसका एग्जांपल है बॉइलिंग ऑफ वाटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। Boiling of water at constant temperature। Gaseous reaction in closed container। गैसेस को वॉल्यूम नहीं रहता, वो जिस कंटेनर में भरा जाए उसका वॉल्यूम, मतलब वो गैस का वॉल्यूम होता है। तो अगर कोई गैसेस रिएक्शन हो रही क्लोज कंटेनर में तो इट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। बॉइलिंग ऑफ वाटर अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इन तीनों से थोड़ी अलग प्रोसेस है।
तीनों की डेफिनेशन भी कवर हो गई. The process which is carried out at constant temperature is called isothermal process. The process which is carried out at constant pressure is called isobaric process. The process which is carried out at constant volume is called, and the last is adiabatic process. Adiabatic process. What is adiabatic process? Q is equal to 0. Adiabatic क्या है? Process in which system does not exchange heat with surrounding, जिसमें सिस्टम एक्सचेंज नहीं करती हीट विथ सराउंडिंग. Q इक्वल टू 0. रिएक्शन carried out at reaction carried out at isolate what reaction carried out in isolated system. So in this way we can have the four types of the processes. After having these four types of process, one is the isothermal, isobaric, isochoric, adiabatic. Temperature, pressure, volume in which system does not exchange heat with surrounding. Have you written? So in this way we can have the how many types of processes? Four. Next. After having these four types of processes, two processes are very important. One is the isochoric and one is the, that is a very important great concept you have to keep in your mind, this process. Next, reversible and irreversible. Two types of the processes are there. Reversible and irreversible. One is the reversible, another is the irreversible. So two types of the processes we have. One is the reversible process, another is the irreversible process. So listen what we have about the reversible and irreversible process. तो पहली वाली देखेंगे हम कौन सी प्रोसेस है, रिवर्सिबल. यहाँ पे फैक्टर्स हम अलग अलग फैक्टर्स के बेसिस पे इनको डिवाइड करेंगे. रिवर्सिबल में क्या होता है, ये जो फोर्स है दैट इज अ ड्राइविंग फोर्स एंड ये है अपोजिंग फोर्स. धन्यवाद धन्यवाद. तो ये है ड्राइविंग फोर्स, ये है अपोजिंग फोर्स. इन दोनों के बीच में जब ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स के बीच का डिफरेंस कैसा रहेगा, कब, किसके बीच का, ड्राइविंग और अपोजिंग, ये बहुत ज्यादा है और ये बहुत कम है, तो ये ऐसे मारेगा, ये वापस नहीं उठ पाएगा. We always take the example here to explain this. We have the two पहलवान, this is x and this is y.
ये बढ़ा लेते थोड़ा सा। अब बताओ, ये पहलवान है, ये छोटा पहलवान है। अब ये एक्स है और ये वाई। तो जब एक्स वाई का, ये इधर से उसका वाई का हाथ है, ये एक्स का, जब ऐसे मारेगा तो क्या ये वाई उसको वापस कर पाएगा? तो प्रोसेस कैसी है? इरिवर्सिबल। क्योंकि ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। When the difference between the driving force and opposing force is a large value, तो process is irreversible। लेकिन इसी का भाई आ गया y डैश, इसी के जैसा, तो क्या होगा? दोनों सेम है। दोनों सेम होने की वजह से, दोनों क्या होने की वजह से? सेम। जब वो ऐसे जाएंगे तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। डू यू अंडरस्टैंड? और इसलिए उनका चालू रहेगा, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। प्रोसेस क्या होती रहेंगी? रिवर्स। प्रोसेस रिवर्स होती रहेंगी। कौन तुम्हारा नाम है? प्रोसेस क्या होती रहेंगी? रिवर्स। और प्रोसेस अगर रिवर्स हुई है ना, कब होगी प्रोसेस रिवर्स? जब डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स कैसी वैल्यू रहेगा? लार्ज वैल्यू। When the difference between driving force and opposing force is a large value, that process is reversible, irreversible, and infinitesimally small value to it is reversible. So depending upon the way that factors, पहला factor, the difference between driving and opposing force, the difference between ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स कैसा है? इनफाइनाइटसिमली स्मॉल। इनफाइनाइटसिमली स्मॉल। द डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स इज इनफाइनाइटसिमली स्मॉल। तो इट इज विच फोर्स? इट इज विच प्रोसेस? रिवर्सिबल प्रोसेस। But if the difference between the driving force and opposing force is a large value, so it is irreversible process. When difference between driving and opposing force is infinitesimally small, it is irreversible process. Sorry, what? Reversible. And large value है तो it is irreversible process. यहाँ पे जो डिफरेंस है बहुत कम है, इनफाइनाइटसिमली स्मॉल है। और इनफाइनाइटसिमली स्मॉल होते हुए शुरुआत जब होती है प्रोसेस की, तो ऐसे शुरुआत से ही रुक जाते हैं। रुक जाते मतलब दोनों प्रोसेस क्या हो गए? इक्वल। मतलब इट अटेंड द इक्विलिब्रियम। यहाँ पे रुकेंगे, फिर ऐसा जाएंगे, इधर रुकेंगे, फिर ऐसा जाएंगे, इधर रुकेंगे, ऐसा जाएंगे, रुकते रुकते ही रहते हैं। और इसलिए इट अटेंड इक्विलिब्रियम एट एवरी स्टेप। और वो डायरेक्ट चालू हुआ, डायरेक्ट एंड पे ही रुकेगा। इट अटेंड इक्विलिब्रियम आफ्टर completion of process. So attained equilibrium at every step, reversible में attained equilibrium at every step, and ये after completion of process। ये जो एक बहुत बड़ा बच्चा एक बहुत छोटा है, खट से प्रोसेस फट से हो जाएंगी। मतलब कैसे होंगी? फास्ट। लेकिन इसमें चालू रहेगा, इधर 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 इधर। ठीक है, तो इसलिए ये कैसी होंगी? स्लो। इसलिए स्पीड ये स्लो है और ये फास्ट। यहां पे मिलने वाला जो वर्क है, यहाँ पे
जो पहलवान है वो ज्यादा वर्क नहीं करेगा क्योंकि अपोज ही नहीं हो रहा है, इसलिए फट से हो जाएगा, उतना ज्यादा जान लगाने की जरूरत नहीं है। तो उसका जो वर्क है वो नॉर्मल वर्क है, लेकिन इधर अपोज बहुत ज्यादा है, तो फिर जीतने के लिए एनर्जी भी बहुत ज्यादा लगेगी, तो वर्क डन भी ज्यादा, एंड सो वी गेट विच वर्क डन, मैक्सिमम वर्क डन। वर्क डन कैसा वर्क मिलेगा, मैक्सिमम वर्क डन विल ऑब्टेन्ड। ठीक है, नो मैक्सिमम वर्क, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, no maximum work is obtained. Next, reversible. What is reversible? Irreversible का है all natural processes, all natural processes are irreversible. इसका एग्जांपल आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन of gas. Isothermal reversible expansion of gas. So in this way we can have, this is the reversible process and irreversible process. Do you understand? One is the reversible, another is the irreversible. Clear? Next. हो गया, लिख लिया? Isothermal reversible expansion of gases. आगे चलेंगे, कर दो बंद। नेक्स्ट, अभी हम चलते हैं वर्क के तरफ। हमारे पास अलग अलग टाइप के वर्क है जिसको हम डिनोट करते हैं W से। वर्क जो होता है केमिकल रिएक्शन में, वर्क दो तरीके से होता है। बचपन का हमारा वर्क का एक फॉर्मूला है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब भी उनके ऊपर हम क्या एग्जर्ट करते हैं, फोर्स, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट गिव्स यू वर्क। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। फोर्स को हम डिनोट करते हैं F से, डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं D से। एंड सो वी हैव द फॉर्मूला हियर, द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क। सो वर्क का हमारे पास फॉर्मूला है, तो जब भी वहां पे डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क होगा। दो तरह की गैसेस रिएक्शन होती है, जैसे मेरे पास ये रिएक्शन है N2 गैस प्लस थ्राइस H2 गैस। टोटल गैस के मोल कितने हैं, 4, लेकिन रिएक्शन होके कितने हो गए, 2, तो गैस के मोल कम हो गए। और गैस के मोल पिस्टन लगा होने की वजह से कम होंगे, तो पिस्टन कहाँ जाएगा, नीचे, और बढ़ेगा तो कहाँ जाएंगे, ऊपर। तो दैट पिस्टन विल मूव इन विच डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो piston can move either in a downward direction or in a upward direction. And as that piston moves in a downward direction or in a upward direction, अगर वो downward direction में move करा, कौन, piston, if the piston moves in a downward direction, तो work is done by the surrounding on the system and there is a compression. So two types of work is there.
when there is a compression, then work done work done on system, and that work is what? Positive. When there is a compression, that work is done on system, and that work done is positive. But when there is a any chemical reaction in which the number of moles of gas increases, I can take example decomposition of ammonia, तो दो के कितने हो जाएंगे? चार. तो what happened? गैस के मोल्स बढ़ गए तो piston will move in a upward direction, and as piston moves in a upward direction, then there is expansion, and during the expansion, work done by the system, and that work is negative. This great concept you have to keep in your mind. Compression, work is positive. Expansion, work is negative. So two types of the work is there. One due to the expansion and another is due to the compression. One is due to the expansion, another is due to the compression. As the two types of work are there, one is due to the compression and another is due to the expansion. Getting? अब हम देखेंगे इसका एक्सप्रेशन. हो गया? ये लिख लिया. एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन. Expression for work done in isothermal expansion at constant pressure. ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है. कांस्टेंट प्रेशर वाला ये वर्क डन है. कांस्टेंट प्रेशर वाला जो वर्क डन है उसी को हम पीवी टाइप वर्क डन भी कहते हैं. पीवी टाइप वर्क डन. As it is the PV type of work done. कौन सा वर्क डन है? PV type of work done. As it is the PV type of work done, we have, this is the expression for work done in which expansion? Isothermal expansion. Under the which pressure? Constant pressure. And that work done is a which work done, बच्चों? PV type of work done. So listen, what we have related to the PV type of work done. First we consider one of the container. अब यहाँ मैं लिखा के नहीं दूंगा, ऐसे ही बोल रहा हूँ. This container contains n moles of ideal gas and it undergoes certain gaseous reaction. Due to that gaseous reaction, number of moles of gas increases. And as the number of moles of gas increases, that piston moves in a upward direction. So this V1 is the initial volume. And that piston moves in upward direction. Final volume is denoted by V2. So there is a change in the volume. That change in volume is denoted by delta V. And the pressure was constant. Pressure constant रखना है तभी हमें क्या होता है? वॉल्यूम बढ़ता है. बलून आप उसमें एयर भर रहे हो, वॉल्यूम बढ़ रहा है. एयर भर रहे हो, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो प्रेशर नहीं बढ़ता है. लेकिन जब उसकी कैपेसिटी हो जाती है और उसके बाद भी हम जब उसमें हवा भरते हैं तो फिर वॉल्यूम नहीं बढ़ता, तो क्या बढ़ता है? प्रेशर. बेचारा कुछ समय तक सहन करता है और फट जाता है. अरे होता है ना इसे.
तो जब तक वॉल्यूम बढ़ रहा है प्रेशर नहीं बढ़ रहा है, इसलिए प्रेशर यहाँ पे कैसा है, कांस्टेंट. I say that constant pressure is P external and it undergoes some displacement. There is a movement of that from one place to another place. So there is a displacement. It is denoted by dx. And we have the formula of work done. Work done is denoted by W and it is given by work का formula है बच्चों क्या, force into displacement. Force into displacement is a work done. But we have the formula here, pressure. Pressure is equals to force upon area. Therefore, force is equals to pressure into area. So in place of force, I plot here the external pressure into area into displacement. एरिया मतलब ये आ गया और डिस्प्लेसमेंट मतलब ये आ गया. जैसे एल बी एच होता है तो ये हो गया एल इंटू बी और ये हो गई हाइट. तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, वॉल्यूम. Area into displacement gives you volume. So we get this formula and this volume will be obtained by V2 minus V1. So it is the change in volume. And this is the work done. But अभी हमने देखा था वर्क इन एक्सपांशन इज नेगेटिव. Therefore minus P external into delta V. W is equals to minus P external into delta V. And as we have W is equals to minus P external into delta V. So what we get? Or we can write W is equals to minus P external V2 minus V1. And this work is called PV type of work done. This work is called PV type of work done. Keep in your mind, this work is called PV type of work done. After having this PV type of work done, we will see here the next work, that is the maximum work. This is the PV type of work. इसके बाद जो मिलेगा that is the which work? Maximum work. Okay? You can give the heading expression for maximum work done. Expression for maximum work. Here also I consider one of the container. This is one of the container we have and it is fitted with piston. Initial volume is V1. It is also filled with this. इसके ऊपर है P is the pressure. अब क्या हुआ, if external pressure, जो बाहर से ऊपर से जो प्रेशर है उसको स्मॉल वैल्यू से कम किया डीपी से. एक्सटर्नल प्रेशर P is decreased by small value dp. Then external pressure P is decreased by small value dp. Then अगर एक्सटर्नल प्रेशर को स्मॉल वैल्यू डीपी से डिक्रीज किया, then if external pressure is decreased by small value dp, then
piston move in upward direction. Piston moves in upward direction. Piston moves in upward direction, and therefore there is small work done, that is dw, and therefore new pressure, therefore P था dp से कम हुआ, तो अभी प्रेशर कितना बचेगा, P माइनस dp. P था dp से कम हुआ, तो अभी प्रेशर कितना है, P माइनस dp. That is the P external. P external is equals to P minus dp. Therefore, we have the formula dw is equals to minus P external into dv, small change in volume. P external की वैल्यू क्या पुट करेंगे, P माइनस dp इंटू dv, मल्टीप्लाई होगा माइनस P इंटू dv, माइनस माइनस प्लस dp इंटू dv. dp एंड dv वेरी स्मॉल, dp और dv दोनों कैसे, वेरी स्मॉल. ये यहां तक चला गया. अब न्यू जो प्रेशर है वो P एक्सटर्नल, इट इज P माइनस dp, और यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा दैट इज व्हाट, dv, चेंज इन वॉल्यूम. अब dp बहुत स्मॉल है, देयरफॉर dp into dv is very 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 small and can be neglected. Therefore dw is equals to minus p into dv. dw is equals to minus p into dv, and as we have the dw is equals to minus p into dv, हमारे पास है dw is equals to minus p into dv हमारे पास है, तो क्या होगा, अब मैक्सिमम वर्क डन अगर मिलाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट. मैक्सिमम वर्क डन इज ऑब्टेन्ड बाय integrating above equation in V1 to V2, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर भी चेंज, प्रेशर वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, तो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम. तो वॉल्यूम, तो पहले तो इंटीग्रेशन क्या होता है कि छोटी चीज का इंटीग्रेशन करेंगे तो बड़ी चीज मिलेंगी. तो इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल्स टू w मैक्स, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे माइनस p इंटू dv विद इन अ लिमिट v1 टू v2. अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिल चुका है क्या, dw इज इक्वल्स टू w मैक्स, और यहाँ पे देखो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो प्रेशर को हम बाहर नहीं ले सकते, और इसीलिए हमें प्रेशर को रिप्लेस करना पड़ेगा किसी दूसरे वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे कौन चाहिए, वॉल्यूम. सो वी हैव द इक्वेशन pv इक्वल्स टू nRT एंड p इज इक्वल्स टू nRT अपॉन v. तो हम अभी प्रेशर की जगह वहां पे पुट करेंगे nRT अपॉन v, माइनस साइन बाहर निकाल लिया, v1 टू v2 nRT अपॉन v इंटू dv. नंबर ऑफ मोल्स गैस के कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, t कांस्टेंट है, दिस कैन बी रिटर्न आउटसाइड. यू गेट v1 टू v2 और dv अपॉन v.
माइनस, हमारे पास एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स टू द बेस ई। यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे, माइनस एन आर टी। अब इधर हम इसको पुट करेंगे, ये है v1, ये है v2, और ये बनेगा क्या, ln, लॉग की जगह ln ही बोलते हैं हम इसको, ln x log of v to the base e, this is w max, as it is the w max minus nrt। अब उसको पुट करेंगे तो ln v2 माइनस ln v1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस nrt ln v2 अपॉन v1, log of a माइनस log of b इज इक्वल टू log of a अपॉन b। अब ln मतलब क्या होता है, 2.303 log to the base 10, तो हमने उसको पुट किया w max माइनस एन आर टी, ln की जगह पुट करेंगे 2.303 log v2 अपॉन v1 टू द बेस 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वी गेट w max is equal to minus 2.303 nRT log of v2 upon v1 to the base 10. We get this formula, and by Boyle's law, constant temperature पे P1 V1 is equals to P2 V2, तो V2 अपॉन V1 इज इक्वल्स टू P1 अपॉन P2, तो इसीलिए हमें इसी का फॉर्मूला मिलता है W मैक्स माइनस 2.303 nRT log of P1 upon P2 to the base 10, and in this way we have seen our two formulas of work done। आगे के फॉर्मूले हम कल देखेंगे।